नाउ इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ऑफ रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। अब वो मिनरल्स जिनके थ्रू रॉक बनती है उनका क्या इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस है। द सिविल इंजीनियर्स नीड टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स precisely to enable them to consider different rocks for any required purpose, that is, as foundation rocks, as road material, as concrete aggregate, as building stones, as a flooring or roofing material, as a decorative material, etc. All properties of rocks are in turn depend upon the properties of their constituent material. Thus, properties of civil engineering um, importance such as their strength, durability, and appearance of the rocks can be assessed only with the knowledge of the minerals that form rocks, that is, rock forming minerals. The economic minerals, since they are scarce, the economic minerals, since they are scarce हो गई इन्होंने scarce लिखा है, do not influence the properties of rock and are hence irrelevant for the civil engineering point of view. However, if they happen to occur in large quantities, their economic value will not permit them to be used either as construction material or as foundation site. सिर्फ एक और प्रॉब्लम आती है कि आपने सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं देखना होता है या आपने ये नहीं देखना होता है कि क्वालिटी क्या है, आपको ये भी देखना पड़ता है जब कंस्ट्रक्शन करते हैं कि इकोनॉमिक भी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि कोई मटेरियल जो स्ट्रांग है वो कम अवेलेबल है कंस्ट्रक्शन साइट से तो आप कहीं और से मंगवाएंगे। वो भी देखना पड़ेगा ना कि जो आपके आसपास अवेलेबल है उसी में ही आप बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन दें। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि ये भी चीज को काउंट करना पड़ता है कि जिस तरह का आपका पर्पस है आपको और अवेलेबिलिटी है मटेरियल की उसमें आपको बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देना पड़ेगा। डिफरेंट मेथड ऑफ स्टडी ऑफ मिनरल्स, स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन है, स्टडी ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, एक्सरे एनालिसिस है। मिनरल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।